Hello class 6. I am teaching you third chapter of the biology, that is cell. Today we will learn about the cytoplasm. What is cytoplasm? I will tell you. So cytoplasm, the part of the cell which is in between the plasma membrane and nuclear membrane is called the cytoplasm. So the part of cell which is present between the plasma membrane and nuclear membrane is known as a cytoplasm. Okay, so now I'll show you where the cytoplasm is present in the cell. So this is a cell, and this outer layer I had told you, this is a cell membrane, this is a nuclear. So and outer cell of the nucleus is known as a nuclear membrane, and this layer, outer layer of the cell, is known as a cell membrane. So cytoplasm is present between the nuclear membrane and cell membrane. So this part, this green part, uh, uh, you are seeing this part is known as a cytoplasm. So this lemon color part is known as a cytoplasm. Okay, let's move forward now. So cytoplasm understood where it is situated. Now it is a jelly like substances containing a variety of small structures called cell organelles. So cytoplasm का structure कैसा है? That is a jelly like structure, and some small structure are also present in it. That small structure is called a cell ऑर्गेनील्स. ओके, अब ये स्मॉल स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा. सो दीज ऑल आर द small structure present inside the cytoplasm, and other inclusions which is present inside the cytoplasm. and inclusions का मतलब होता है the part which is present within. तो जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, दैट इज अ इंक्लूजन्स. सो दैट पार्ट विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट within the cytoplasm such as storage प्रोडक्ट. सो ऐसे पार्ट जो जिनके अंदर कुछ चीज़ें स्टोर रहती हैं, दैट वर्क्स एज अ स्टोरेज प्रोडक्ट्स. और उसमें क्या क्या सेव रहता है, क्या क्या उसके अंदर स्टोर रहता है, तो ज़रा देखते हैं. सो that part that part which is already present or already present within the cytoplasm, that part contains fat, proteins, lipid like आपका glycerol and cholesterol etc. These all are the lipids. तो cholesterol भी lipids में आता है, protein you know very well, and fatty acids, that is fat, protein, lipids etc. These all are present within the cytoplasm. Okay, now water is the main component up to 90% of the cytoplasm. तो water cytoplasm का main content है, और ये 90% तक cytoplasm में प्रेजेंट रहता है. तो हम ये कह सकते हैं जो cytoplasm है वो 90% वाटर का बना हुआ होता है. ओके, नाउ मैनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन इट. और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं. राइट, नाउ साइटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी. ओके, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एंड दीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ वेरियस सेल ऑर्गेनील्स मैंने क्या बताया था? स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सो वेरियस सेल ऑर्गेनील्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन इट. ओके, तो जो जितने भी सेल ऑर्गेनील्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शन इनसाइड द cytoplasm. Okay, so this is all about the cytoplasm.
I believe you understood this cytoplasm. Now move forward towards nucleus. What the nucleus is, this is a very important organelles or very important part of the cell. Okay, so it is the most prominent. Prominent का मतलब main, important, ठीक है, important, right? So it is the most prominent cell organelle in the cell. It is usually spherical or oval in the shape. Okay, इसका shape कैसा है, spherical या फिर oval. Okay, now it was discovered by the Robert Brown. So Robert Brown was a scientist who discovered the nucleus. Okay, now move forward. It is the brain of the cell. Okay, so why it is called a brain of the cell? Like in human body, brain controls all the functions of the human body. Similarly, the that nucleus is controls all the functions, all the chemical reactions of the cell. Okay, now देखिए लिखा भी है, दिस इज ऑल्सो रिटन, इट रेगुलेट्स द सेल फंक्शंस. ओके, तो ये सेल के जितने भी फंक्शंस हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है. नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, सो सी this outer layer of the nucleus is called a outer membrane or nuclear envelope. Okay, in nuclear envelope या outer membrane. Okay, this one is this second line, this black second line is, you are seeing this second line is a inner membrane. So this one is the outer membrane and this one is the inner membrane. Okay, now this spherical structure present inside the nucleus, that is called nucleolus. Okay, so nucleolus is a part of nucleus and nucleolus is important for the राइबोसोम असेंबली. न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोम के फॉर्मेशन होने से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो जितने ज़्यादा राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होंगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, उतनी ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण होगा, प्रोटीन बनेगी. ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर, this lemon structure you are seeing, this lemon structure is known as a chromatin. Chromatin means DNA and protein. So this is a protein along with the DNA. DNA क्या है, DNA is the genetic material. Okay, so this is the, DNA is the genetic material. It contains all the genetic information inside it. Okay, so this lemon color is a chromatin. Chromatin means DNA and protein combined called chromatin. This oval shaped structure or spherical shaped structure is known as a nucleus. Nucleolus is responsible for the ribosome assembly, and this is a nuclear pore. This is a nuclear pore. Small pores or small hole like structure is called the nuclear pores, and these nuclear pores are very important for the translocation or ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल. यहीं से जो मटेरियल है वो बाहर जाता है और दूसरा इम्पोर्टेंट मटेरियल अंदर आता है. तो दिस प्लेज वेरी important रोल फॉर ट्रांसलोकेशन एंड transportation of the material. So this is a structure of the nucleus. So this is all about the cytoplasm and nucleus. I will teach you more in my next video. Till then, prepare it. Thank you.